Good evening, everybody. Happy Holi to everyone watching us. Hi, Tushar. Happy Holi. Hi, ma'am. Happy Holi and a very happy Women's Day to you and all the ladies out there. थैंक यू सो मच. बाकी तो सब ठीक है तुषार. ये जो सडन प्रोग्राम बना लिया बात करने का, ये तो मुझे बड़ा मजा आने वाला है ऐसा लगता है. Unusual. Normally I always think कि चलो let's plan this out. And suddenly when I Hmm. received a call from you, I was like, चलो करते हैं impromptu से. This was You wonderful. know, वही जब आपने मेरी आज वुमेन्स एम्पावरमेंट की पोस्ट पर कमेंट किया तो मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक किया कि एक तो आज वुमेन्स एम्पावरमेंट डे है एंड यू आर सो मच इन दिस फील्ड और आप सबका इंटरव्यू लेते हैं आप सबके बारे में पूछते हैं क्यों ना आज मैं आपसे पूछूं about the journey about the person that Shefali Chopra is. So I welcome you yourself on your own channel. That's a surprise. That's quite a surprise, I must say. I was not anticipating this, but and a pleasant one, a pleasant surprise. Well, who is Shefali Chopra? That's a Yes, question. exactly. The thing is, the things that are unseen, that pleasant surprises, are the ones that work wonder. So please, मैम, अब आप अपने ही दर्शकों को अपने ही बारे में बताइए उनको एक जिज्ञासा होगी to know you and everybody know you're a storyteller, you're doing quite good in life, you are a TEDx speaker, and I can go on, but आप अपनी introduction खुद दीजिए. अरे वाह, ये तो यूनिक ही हो गया. तुषार, या you're right, I'm a storyteller. जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ I'm your storyteller, and I am. But yes, of course, this is just one little aspect about me. This is not me in totality. There are lots of things to me. I'm a mother, I'm somebody's daughter, I'm a family member to so many people, right? वो Right. रोल्स निभाती हूँ, उसके अलावा स्टोरी टेलर हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स, आई मस्ट टेल यू, आई स्टार्टेड एज अ पर्सन हु वाज वेरी मच इनटू थिएटर. और मैं बहुत Oh, great, बच्चों को बहुत सारा थिएटर सिखाती थी उत्तराखंड में ही. great. Oh, great. एंड और ये आज की बात नहीं, इस बात को भी ऑलमोस्ट 15-17 साल हो गए होंगे. it's Great. it's it's a long time. Yes, it's a long time. तो अपना स्क्रिप्ट करना, उनसे एक्ट करवाना, it was quite a joyous experience for me, if you really ask me. मैं बहुत एन्जॉय करती थी. एंड और तुम्हें ये भी बात जान के हैरानगी होगी जो बहुत लोग नहीं जानते, मैंने कभी बताया Mhm. ही नहीं कि मैं टॉडी क्लासेस भी लेती थी, छोटे-छोटे बच्चों का. या See, something new is coming up. कुछ नया लोगों को पता लग रहा है. Yes, I used to take study classes, and then much later, I started doing great conversations with senior citizens, and I would do stories with them, and I started stories with children, and of course, much later, I became a motivational speaker because मुझे लग रहा था कि शायद मेरी कहानी सुनकर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं. And I started doing that, and I have completely, I'm actually enjoying it. I'm quite enjoying it. So Great. when people ask me what do you do, well, this is what I do right now, and I am a storyteller, and I enjoy sharing stories with everybody. And I think, yeah, that's what I am all about right now. Yes. Great, great, great. And anything like people would be definitely asking you, लोग पूछते होंगे आपसे आपकी फैमिली के बारे में, आपके किड्स के बारे में. तो आप कितना ओपन रहती हैं ये सब बताने के लिए इन पब्लिक और नॉट? Tushar, my life, my personal life is my personal life. You पर्सनल know, लाइफ of डेफिनेटली. course, हाँ, बहुत लोग मुझे पूछ आपकी फैमिली में कौन है? क्यों भाई? बीमा कराना है? नहीं. सही में. मतलब किस लिए? व्हाई? जैसे आप लोगों की फैमिली में लोग हैं, उसी तरह मेरी फैमिली में भी मेरी लोग फैमिली हैं. डेफिनेटली. एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. मेरा पर्सनल स्पेस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. And राइट. that's why I don't easily share my pictures with my family, नाइस. because that's my personal space. पर्सनल And स्पेस. I'm sure बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो uh, बाहर, what I do is my work. It's being an राइट. introvert. But when I'm back home, I want to keep that very wrapped.
एंड आई थिंक उसमें ट्रू। कोई बुराई नहीं है, तो कि मैं सबको वेरी स्कूटर लेके शुरू हो जाऊँ और बताऊँ कि ओह! मेरी फैमिली में ये है, मैंने यहाँ कॉफ़ी पी, मैंने यहाँ चाय पी, मैं यहाँ हॉलिडे के लिए गई। इट्स माय पर्सनल थिंग। दैट्स personal. द रीज़न आई True. डोंट शेयर विद पीपल। येस, येस। True. That's great. And I remember last time you were talking and we were on call और किसी ने आपसे पूछा how do you have kid and you replied no I don't have kid I have a grown up boy so Yes, I have a boy who is 19 years old. Yes, 19 years old. yes, he's in a university. Yes, he's a big boy. So Yeah. I'm a mother of a big boy, I must say. Yes. A proud mother, a very proud mother, and I hope your son is equally proud to have a mother like you, the person you are. And Yes, I'm sure about that. I'm sure about and it. recently I saw your recent TED talk. That was great. That went phenomenal. So do you like to again आप वो बोल तो चुकी हैं TED talk पूरी की पूरी आपके चैनल पर भी है, बट आप कुछ उसके क्रक्स हमें दोबारा बताना चाहेंगी? Well, sure. Yes, it is on the channel. If anybody wants to see it, please जाके देखिए। अ, हमारा टॉपिक आइडेंटिटी से रिलेटेड था कि आप हैं कौन? एंड जैसे मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया कि आइडेंटिटी किसी एक चीज़ से नहीं होती, बहुत चीज़ों से होती है। एंड जैसे कि एक आम सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है और वो अपने पत्ते खो देता है किसी न किसी सीज़न में, फिर नए पत्ते आते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत कुछ खो-सा जाता है और फिर कुछ नया उभरता है, कुछ नया निकलता है। सो आई थिंक दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ अस। एंड राइट, आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी कि जो लोग इसको सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज़ इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया है attraversiamo, which means to cross over. And I shared how I decided to cross over with my old self into my new self because my competition was with nobody. It was with my वेरी own ट्रू। self that I सेल्फ compete every day. हर रोज मैं अपने आप को बेहतर करती हूँ। मेरा मुकाबला किसी और ग्रेट। से है ही नहीं। Yeah, this is what it is all about, Tushar. Yeah, and that actually is the essence of truth, true nectar of life. अगर हम हर दिन खुद से ही बेहतर करते रहें, सो अगर हम हर दिन अपने आप को 1% बेहतर करें, तो एक साल के हम अपने आप को 37% बेहतर कर पाएंगे जितने हम एक साल पहले थे। एंड एवरी ईयर 37% अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज एंड वे of improvement that a human can muster in his her life। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही Absolutely. है, प्रॉम्प्ट है। और हर इंसान अगर दूसरों को देखने की बजाय अपने आप को देखे और अपने आप को बेहतर करे, तो पूरी दुनिया तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगी ना। अगर एवरीबॉडी डज अ यू नो मिनिमल Mm. मिनिमल से मिनिमल अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की रोज थोड़ी ना थोड़ी कोशिश करे, तो पूरी दुनिया तो अपने आप बेहतर बनेगी। तो वेरी वेरी गुड टेड टॉक एंड आई आई रियली लाइक्ड इट। एंड ये तो Thank थी you चलो so अब तक की बात। वेलकम नहीं, वेलकम मगर मैम। एक ये बात तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी तुषार, ज जब हमने बात करनी शुरू करी तो तुमने कहा हैप्पी वुमेन्स डे। आज मैंने तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा एंड मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही। भई तुषार कहता है कि आज ही खाली वुमेन्स डे नहीं है, वुमेन्स डे रोज़ होता है। ये बात वैसे रोज टू क्वाइट एन एक्सटेंट काफ़ी सही है, बहुत सही मैं मानती हूँ। क्योंकि देखो होली साल में एक ही बार आती है। हम होली बिल्कुल रोज़ नहीं मनाते। मगर येस, सेलिब्रेटिंग वुमनहुड इज़ समथिंग स्पेशल एंड व्हाई राइट शुड वी लिमिट आवरसेल्व्स कि हम एक ही दिन करेंगे? I think बिल्कुल celebrations don't have to be huge, but yes, राइट छोटी-छोटी चीज़ों में celebration करना अच्छी बात है। And I was very overwhelmed and I said, "Yes, I agree with you." थैंक यू। नहीं तो ही मैंने लिखा कि एवरी डे इज वुमेन डे, टुडे इज जस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड व्हाई शुड इट ऑल बी ओनली बी वन डे। क्योंकि मैं मानता हूँ एक नारी जो है वुमेन है, वो एक समाज का गठन करती है। लाइक True. एवरीबॉडी यू सी अ मैन आउट देयर, उसके पीछे उसकी माँ की अपब्रिंगिंग होगी, उसको कुछ कुछ ना कुछ अच्छे संस्कारों से पाला नवाजा होगा, उसको कुछ बचपन में ही डूज एंड डोंट्स बताए गए होंगे, तो वो आज संसार में एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग है।
तो अगर हर एक तो एक नारी जो है वो पूरे समाज का गठन करती है कि एक इंसान अगर एक मेल मेंबर पढ़ाई कर रहा है या कुछ ऊपर जा रहा है तो वो अकेले पे रहेगा, पर जहाँ एक वुमेन पढ़ाई करेगी वो अपने पेरेंट्स को भी अच्छे से हैंडल करेगी, अपने इन लॉज को भी अच्छे से हैंडल करेगी और अपने चिल्ड्रन को भी आगे एक अच्छी तालीम देगी, अच्छी शिक्षा देगी और उनको भी बहुत उच्च स्तर पर लेके जाएगी। तो वुमेन इज एक्चुअली बिल्डिंग अप द नेशन इन द बैकड्रॉप। पर एब्सोल्युटली और जो हमारी मदर्स हैं, देखिए दिन में कितने कितने घंटे किचन में बिताना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, मेरे ट्रू। जैसे इंसान है, नो, आई कैन राइट बुक्स, आई कैन डू मीटिंग्स, आई कैन डू एनीथिंग, बट अगर मुझे एक टाइम पे खाना बनाना पड़ जाए, बस ना हो जाता। So that is way too a hectic work, and then they listen to everybody, you know, पे हस्बैंड भी वाइफ को सुनाता है, बच्चे भी आके वाइफ को सुना देते, कुछ और कोई भी, वो बेचारी किसको सुनाए। ट्रू, वेरी वेल तो सेड। आई थिंक इन बातों में बहुत जो मैं समझती हूँ आपके बारे में, वो यही समझती हूँ, यू वेरी पैशनेट अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, यू वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, एंड आई थिंक दैट रियली काउंट्स। थैंक यू। बिकॉज अगर आप ये छोटी चीजें, जैसे अभी आपने बताया कि भाई कोई कहेगा ओ इसकी माँ ने इसको अच्छी तालीम दी है या अच्छा सिखाया है, उसी तरह अगर कोई बिगड़ जाता है तो सबसे पहले वही लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कहते हैं ओह लगता है इसकी माँ ने इसको टाइम नहीं दिया, सो फट बिल्कुल से लोग पकड़ लेते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's a very very important role that a lady plays, and yes, very rightly said, she not only just takes care of a child, she can actually take care of the society, the nation, you know, it's like it just flows. So राइट। इसमें कोई limitation नहीं है। So I think yeah, it's a very बड़ा important औधा मिला हुआ है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फ्रॉम हियर, अब आप आगे किस दिशा में मूव कर रही हैं, व्हाट्स न्यू, what new are you planning? Tushar, there's lots that's brewing. Great, You know, there is corporate stuff coming up. great. Uh, there are some stories in schools that I'll be handling, Great. and um, and also taking this to a little different level. You know, Oh, nice. like हम ऐसी कहानियां करना चाहते हैं। अभी बल्कि एक दो दिन में ही मेरा कहीं पे उत्तराखंड में है, टू डू विद विमेन। जैसे Oh, nice. बहुत हर जगह इफ यू रियली सी काफी हद तक women are, you know, like there is a underlying current that bothers them, Mm-hmm. even at a higher level or a lower level or even in school or university. It's like when people poke them, True. and that's a big concern. Why I say poke them, because I would always want it to sound things that people can understand very simply. छोटी चीजें poke करती हैं, you know. Right. And I think we should refrain from doing so. So getting into women empowerment is a very big thing, and that's exactly what I'm working upon. I want to Oh, go and great. speak to women from the village. I want to go and speak to the other women. And I think it's very important कि अगर कहीं पे भी issue आता है, they should speak out. बिकॉज़ Right. और जहाँ पे कोई नहीं बोल सकता तो किसी और को किसी और के लिए खड़ा होना चाहिए। यू नो बिल्कुल, हर इंसान बिल्कुल। में दम नहीं होता है, कोई डर बैठ True. जाता है, बहुत सी बातें होती हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते कि आप किसी और के लिए खड़े हों, बिकॉज़ आई थिंक उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। Ah, yeah, that's great. That's great. And even while taking many of the corporate lectures and interacting with the women across the globe, मैंने भी ये ट्रेंड देखा है। Many of the women are हाँ, like, no matter if they are at a हैरेसमेंट very इज़ small level, very yeah, it's a very small level and at a huge level too. Harassment, true, you know, harassment it's is there. difficult. Yeah, it's very difficult for people to handle, and I think it's high time that people Yes, understand. A lot of times, people don't want to be rude, but you need to understand that they are firm. You yeah, know, true, anybody true, who is not fighting out with you or slamming you with something, doesn't mean she likes it. If she's not replying, if she is not yeah. interested, I think you should get a answer, you know?
That's important. Yes, yes. And it's high time we have to make people aware of what are their limitations, what are the do's and don'ts, right? Yes, it's So very like important. and even the CEOs, they face the same level of you say harassment as compared to somebody who's working at a very minimalistic level. So level and Absolutely. all that doesn't matter. Just No, because somebody is women, nobody has given anybody a right to even poke them just because of their gender identity. and absolutely. and and Yes, like 2023, it's high time for people to wake up. right. Very well said. सो आई थिंक इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक लेवल पे पहुँच के सोचते हैं हम चुप कर जाएँ और कुछ ना कहें और लेट्स पुट इट अंडर द कार्पेट बट अंडर द कार्पेट डज़न्ट रियली हेल्प, यू नो? बिल्कुल जी। वो चीज फिर कहीं ना कहीं और रिफ्लेक्ट होगी, वो पेंट अप एंगर, वो पेंट अप गुस्सा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही है ह्यूमन बीइंग को। आफ्टर ऑल एवरी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। Yes, we're all human beings. There are a lot of times I get, I can't say traumatized, but kind of, the kind of messages that are bombarded at me, especially on the messenger. And, you know, people don't get it. A lot of times I'm not replying, and many a times when people get out of control, then I have to block them. And that's the worst thing I can do because I feel bad. I या feel bad, but then I have no option. There is या no ट्रू option ट्रू left because ट्रू I mean, you have to be decent just because या out there, somebody, or suppose me, I'm a storyteller. That's it, period. And there's nothing else to it. I, या there's no other thing that I can explain to you that, listen, just because I'm not being rude to you doesn't mean I like it. Just ट्रू because I'm not slamming things at you doesn't mean that it's okay with me. It's not okay with me. When you या appreciate me for my work, when you appreciate me for what I do, I love it. Because that's what really matters. कभी-कभी ऐसा हो जाता है तुषार आदमी इतना परेशान हो जाता है, पुंधला जाता है और कहता है यार मुझे काम करना ही नहीं है। ट्रू। इवन आई हैव हर्ड दिस। एंड जो अभी आप बता रहे हैं आपका वो एक डीप इमोशनल कनेक्ट इन सब के साथ, लाइक वो या महसूस हो रहा है कि आपको किस किस करना ही प्रॉब्लम नहीं से गुजरना पड़ा होगा। एंड इट इज स्टोरी ऑफ एवरी सेकंड वुमन हु इज वर्किंग आउट देयर है। एंड ट्राइंग टू मेक हर आइडेंटिटी। Yeah. तो Difficult डेफिनेटली because एंड we are out there trying to make something out of our life. या And if you poke me, is what I say. When you are poking me, it's bothering me, definitely bothering me. And not necessarily, there are a lot of people who can handle this stress. Or let me say, there are a lot of women who, if you give them, like एक गाली दोगे वो तुम्हें चार देगी. But जरूरी नहीं कि सारे वैसे हो. ट्रू ट्रू Why do I have to stoop to somebody else's level? डेफिनेटली You know, नॉट। why should I change my standards? And राइट now राइट everything is so casual. Why? या I may be a little old school, thought. Maybe that's what I think. नो यू आर But द वेरी वेरी राइट स्कूल थॉट। but yeah, But I want to be focused. actually I the want thing with public figure is, तो public figures के साथ ये problem है, हमारी yeah, identity सब it's open everywhere, हर yeah, कोई number accessible है because anyway we have to give it, ठीक है, yeah. हर एक चीज accessible है, but after reading my book, many women have approached me to write about women. Like, you convey the message in such a good form, आप women empowerment के बारे में बोलिए, आप women empowerment के बारे में कहिए, and to it's surprise how things are getting connected, and आज ये हम कहीं से शुरू हुए थे बात और कहाँ पहुंच गई। और डेफिनेटली ये इस वक्त की एक, आप संसार को तभी एक बेहतर बना सकते हैं when you solve a real world problem, जब एक Right. real It's world very problem important. को आप But solve otherwise, करते there हैं। is a lot of gap. There is a lot Yeah, of gap between what we are thinking and what we are doing. you बिल्कुल know बिल्कुल। there is hota hai, we're just thinking about something or we're just saying a thing but we're not doing anything Yeah, about it, and I'm very right, happy that a person like you is thinking about it, and let's collaborate together and do something huge in this definitely, connection because it's very important. These are things that matter. right. These are real life stories. This is what really bothers. Actually.
And I सो think जो it's कथ high time that people take राइट, some kind of action. हाँ जी, जो आजकल जो कथनी और करनी में जो डिस्पैरिटी है, अगर हम इस गैप को थोड़ा भी ब्रिज कर पाएँ तो दैट वुड बी अ, ह्यूज ह्यूज शिफ्ट, द बटरफ्लाई इफेक्ट. सो Absolutely. या Absolutely. सो आई लव दिस टर्म बटरफ्लाई इफेक्ट कि एक तितली के कभी फड़फड़ाने से Yeah. इट ब्रिंग ऑल द स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. सो चलिए, Well, और कुछ मैम आप oh, कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इस well, it's कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में? well, there are little things that I have been doing, and I'm also associated with the shram. यस, And वहाँ पे बहुत सारे लोग, ladies, they're making pickles, they are making so many nice, beautiful things for the society. And I am associated with it. I also like to market it. ओह And ग्रेट, जब हम कहते हैं, oh, let's go local, let's not या just say it, let's do it. लेट्स डू you लेट्स डू know इट. बहुत लोग, हम बहुत आसानी से पैसे फ्रिवलेसली खर्च देते हैं, और देयर आर दीज वुमेन हु आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक देयर लाइफ हैपन. So I यस, think यस, if we start thinking about let's go local, I think that's हाँ a जी, very important thing, really important. Everybody is doing their bit, and I think it gives me real happiness when I look in this direction. काम तो होता ही रहेगा. That's हाँ जी, नहीं, okay. श्रम को Then, मैंने भी बड़े ही क्लोज़ली क्लोज़ली हाँ, मॉनिटर किया, मतलब देखा है, उनका काम क्लोज़ली मॉनिटर किया है, एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्क दे आर डूइंग. oh, एक एक Piyush is a दे आर wonderful, इन wonderful वंडरफुल lady. पर्सन. या, She's doing such a fantastic job, and सच I में. think, I mean, I have known her for so long, सो and या, I have so much respect and love for her. I can't even डेफिनिटली. explain it. You know, तो जो the she's so passionate about her purpose. वर्क, या, I think that's very important. जो भी या, आदमी, and she is providing a livelihood to village women who are illiterate, and जब वो श्रम में काम कर कर थोड़े पिकल्स बनाकर, हैंडक्राफ्ट्स बनाकर, कुछ कर कर, जब वो yeah, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस, स्कूल he's फीस अफोर्ड कर पाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट. एंड हैट्स ऑफ टू पीयूषा बी फॉर डूइंग दिस वंडरफुल absolutely, जॉब. absolutely. या, या एब्सोल्युटली, हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ये इन सब चीज़ों का हैंड होल्ड करना है। व्हेन वी टॉक राइट, अबाउट गेटिंग टुगेदर, व्हेन वी टॉक अबाउट होल्डिंग ईच अदर, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। वी हैव टू हैंड होल्ड अदर पीपल एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज़ देखो जी, ऐसा है, नो मैन इज़ एन आइलैंड, एंड अकेली सक्सेस प्राप्त की तो क्या किया? क्या लेट्स किया, ट्रू, actually hold each other's hand and move forward and do something for the society, because that's very ग्रेट, important. I mean, वही that's something which is close to my heart since I was a kid, and that वही, is अपने what लिए तो we सब जीते हैं. अपने have. लिए तो इवन Really is एवरी एनिमल इज लिविंग फॉर yes, themselves. So what yes, difference, हम इंसानों में क्या डिफरेंस है? yes. तो जब हम So ये I विचार always रख के say I love चलेंगे. creating smiles. I love creating smiles. That's my logo in most of the places that I have written. Like I love creating smiles, and I truly do, because that means a Yeah, lot to me. It really gives me immense satisfaction and happiness, and I yeah, would want to do more in this. great. In this field, I want to continue doing this till whenever I can. You know. That is what really makes me happy. God must bestow a huge lot of success to you and your all of the ventures, and so glad to see आज हमने शेफाली चोपड़ा का एक दूसरा रूप देखा. Oh, एक लाइक हमेशा वाइब्रेंट शेफाली चोपड़ा ने कुछ अपने आप को एक एक अलग अपना रूप हमें दिखाया, और कुछ पेन एरियाज भी बताए, कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स भी बताए. तो इट वाज रियली अमेजिंग. कुछ लोगों के लिए सेशन थोड़ा सा डेंस और heavy हो सकता है, बट when the truth is spoken, it definitely makes a mark. तुषार, ये हमेशा there are a lot of people I do keep getting compliments कि you keep smiling and आपकी smile बहुत कमाल है. So yes, thank you so much, but I must share this, and in fact I जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनकी ज़िंदगी में बहुत कमाल होता है, and they make it happen.
They do. There are times that I feel low. There are times when I feel sad, and there are times when I'm very happy. And I think it's human. And what is important is facing it. Every time I fall down, I get up. That is important. And I think this is one big thing that I always tell people, that we learn, unlearn, and relearn again. These little aspects of life are very, very important. And it's not for the sake of saying it, it is because I have done it myself. And what I do is what I share. And कहते हैं ना, हाँ, बच्चे वही सीखते हैं जब उनके माँ बाप करते हैं। मैं वही बोलूंगी जो मैं करती हूँ, और करेक्ट, जब मैं करेक्ट, बोलूंगी तब वो कन्विंसिंग तभी लगता है क्योंकि अभी मैंने लगता भी है किया है। किया। ट्रू, ट्रू, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल ही, Oh my बहुत ही God, you सही। really took me by a surprise, Tushar, and I really didn't know that you were going to ask me these things. But yeah, uh, I think I'm glad that you did. थैंक यू एंड एवरीथिंग हैज़ अ डिवाइन टाइमिंग। सब Yes, कुछ सब I कुछ think अपने this आप was में होता है। completely a divine timing. तो And डेस्टिनी पे आपने मुझे वो एक शेर की वो एक लाइन याद दिला दी कि एक के हँस के जहाँ का गम जिसको सहना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। कि एक आप हैं जिन्होंने जो थोड़ी-सी बात पर नाराज़ हो गए, एक हम हैं जिन्होंने अपनी हँसी में हर गम को छुपा लिया। क्या बात है! शायर हैं आप। चलो, thank you so much, Tushar, for making थैंक यू this मैम। Holi a happier Holi, and या loads of sunshine, loads of love to everybody watching us. And of course, I'm coming up with many more new stories very, very soon. Yeah, and People, let's do and connect something great on the women empowerment firm angle. And next time we can club up with my other people like women in Web3 ventures. I'm a keynote speaker over there and like in IOM where we talk and let's bring few folks from IOM. That's an indefinitely open minds. I'll ask them to be a part of your gathering, and then you guys can have a chat and collaborate much more at an international level rather than just from villages to international. That's what a modern Indian should be, right? absolutely. That's why I say मैं रमता राम हूँ, बिल्कुल जी, किसी एक जगह को belong नहीं करती. So yes, बिल्कुल। absolutely. So thank you so much, and good Thank night. you, Take care. thank you. Good night. Take care. Bye. Thank you, everybody, for watching us. Have a lovely year ahead, is what I can say. होली के बाद मौसम बदलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर. Please take care. Bye for now. Bye. Take care. Bye.